हेलो एवरीवन। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है ये NBHM 2024 से है। लेट अस सी व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क। द क्वेश्चन इज फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, let z modulo nz the group of integers modulo n, and by Sn the symmetric group of n letters, the number of n's for which we have an injective homomorphism from Zn to S7। तो हमको एक ग्रुप गिवन है z modulo nz which is isomorphic to Zn। ये हमारे पास एक ग्रुप है which is the cyclic group of order n, and Sn the symmetric group on n letters। ये हमको दो ग्रुप्स गिवन है एंड हमको पूछा गया है ऐसे कितने वैल्यूज ऑफ n है, for how many values of n we have an injective homomorphism from Zn to S7। तो हमारे पास एक इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है from Zn to S7, and ऐसे कितने values of n हो सकते हैं। This is what they are asked, and this homomorphism has to be injective। And अगर हमारे पास कोई भी एक इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है, then the kernel of the homomorphism is always the identity, and kernel of a homomorphism is a subgroup of the domain group। तो यहाँ पर हमारा domain group है Zn, so in this case the kernel of F is singleton 0। Now let's quickly recollect the first isomorphism theorem। Let's quickly recollect the first isomorphism theorem। Let us see what the first isomorphism theorem states। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम ये कहता है अगर हमारे पास कोई एक होमोमॉर्फिज्म है T which is from a group G to group G dash, both the groups have the respective binary operations, and इस ग्रुप का कर्नल को let us denote it as kernel of T, then the first isomorphism theorem states that G modulo kernel of T is isomorphic to T of G, and this T of G, the range of the entire homomorphism under the group G, this is a subgroup of G dash। This notation is used for subgroup। This is what your first isomorphism theorem states। And यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप G है वो Zn है, तो Zn modulo kernel of F, this is isomorphic to the range of the group, that is f of Zn, and this f of Zn is a subgroup of S7। And the next thing what we are going to use, that हमारे पास कोई भी अगर एक ग्रुप G है, if G is any group and E is the identity element of the group, this is the identity element। एज इट इज अ ग्रुप तो एग्जिस्टेंस तो ऐसे ही है, मतलब एग्जिस्ट करता ही है। सो वी हैव G modulo this identity element, this is always isomorphic to G। You can easily construct an isomorphism between these two groups। So G modulo identity is always isomorphic to G। तो Zn modulo जो identity है, this is always isomorphic to Zn। तो एंड वी ऑल्सो नो दैट जो आइसोमॉर्फिज्म है इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इट इज ऑफ कोर्स ट्रांजिटिव एज वेल। तो Zn is isomorphic to this is isomorphic to this, so from here I can say f of Zn जो है it is isomorphic to Zn, and this Zn is actually a subgroup of S7। जब मैं बोल रही हूँ that Zn is isomorphic to a subgroup of S7, that means Zn is isomorphic to some H, and this H is a subgroup of S7। अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने वैल्यूज ऑफ n है for which it is a subgroup of S7, कितने सारे cyclic groups possible है in S7, so those will be the values of n। And the last result what we are going to use is अगर G कोई भी एक group है, let us assume this G to be a non-trivial group, and एक element A है
बिलोंग्स टू जी, तो उस ग्रुप का मैं एक साइक्लिक सब ग्रुप हमेशा कंसिडर कर सकती हूँ विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए. लेट अस assume that order of G is finite. तो मैं एक सब ग्रुप एच ए हमेशा कंसिडर कर सकती हूँ विच इज द साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, एंड दिस एच ए इज साइक्लिक. सबसे पहला बात तो ये है that HA is always cyclic, and above that order of HA is always equals to order of A. This is the next part. Order of HA is always equals to order of A. So this can always be constructed. So abhi S7 mein I am looking for the cyclic subgroups, and what are the possibilities of order of those cyclic subgroups. That is something what we are looking for. And order of elements in SN हम हमेशा cyclic decomposition से हम देखते हैं. So here I have S7. So what are the possible cycle decomposition and what is the possible order? These are the two columns which we have already made. S7 है तो identity element तो 1 2 3 4 5 6 7. So only one cycle का सब कुछ है. This is identity element. So order of E यहाँ पर 1 हो जाएगा. And what are the other values possible? So can here n the possible values of n is equals to 1. एक value of n मिल गया. And can the value of n be 2? Yes, of course. अगर मैं एक 2 ले लूँ, एक 2 cycle ले लूँ, then rest all if I take 1. So it is 3, 4, 5, 6, 7. So बस इतना ही. So here the order of the element is LCM of all the lengths of the cycle, which is 2, and the possible values of n is equals to 2. This means that S7 has an element of order 2, and this means that S7 has an element of order 1. Now the next question is, does S7 has an element of order 3? Let us see. 3, 4, 5, 6, 7. अगर मैं 3 length का एक cycle लूँ and all 1 length का लूँ, so again it is possible. Here the order of the element is 3. S7 has an element of order 3, तो उससे हम एक cyclic subgroup generate कर सकते हैं. So here the value of n equals to 3 भी आ गया. Now, can the value of n be equals to 4? Yes, for the value of n equals to 4, मुझे एक 4 cycle जरूर चाहिए, and the rest all should be less than that. So 4, इधर 5, 6, 7. So इधर जो order of the element है, it is 4, and so the value of n here is equals to 4. Now, can the value of n be 5? Of course, yes, it can be 5. 5 and 1 1 का लेंगे, because if I take 5 and 2, order of the element 10 हो जाएगा. So 5 1 1. So इधर order of the element is 5. Therefore the value of n is equals to 5. And वैसे ही 6 1 अगर हम देखें तो yes, the order of the element is 6. So one possible value of n is 6. वैसे ही S7 है तो maximum 7 length का cycle ही हो सकता है. Here the order is 7 and n equals to 7. Now, is n equals to 8 possible? That is something what we have to look for. n equals to 8, मुझे अगर order of an element चाहिए तो 8 लेंथ का एक साइकिल होना जरूरी है, बट S7 में हम 8 लेंथ का साइकिल हम नहीं ले सकते हैं. Therefore n equals to 8 is not possible. वैसे ही अगर हम n equals to 9 देखें, n equals to 9, अगर मुझे एक ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट n equals to 9 चाहिए तो मुझे 9 लेंथ का एक साइकिल चाहिए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है. Now, n equals to 10. n equals to 10 के लिए अगर मैं साइकिल डिकम्पोजिशन को 5 and 2 ले लूं, if this is the cycle decomposition, then the order of the element is LCM of 5 and 2, which is 10. So as order 10 का element है, therefore the value of n here is equals to 10. That is possible.
वैसे ही 11 के लिए 11 तो एक प्राइम नंबर है, देयरफॉर हम को एक साइकिल चाहिए ऑफ लेंथ 11 विच इज नॉट पॉसिबल इन S7। सो n इक्वल्स टू 11 ऐसे ही डिस्कार्ड हो। अभी n इक्वल्स टू 12 के लिए इफ आई टेक 3 एंड 4, 3 एंड 4 अगर ले ले तो इधर the order of this element with cycle decomposition 3 and 4 is LCM of 3 and 4 which is 12. So 12 order का elements है, therefore n is equals to 12। 13 चला गया and n equals to 14 के लिए I need 2 and 7 the minimum जो चाहिए मुझे 2 और 7 चाहिए। 2 और 7 के साथ we can't construct an element from S7, so n equals to 14 भी नॉट पॉसिबल है। नाउ वैसे ही n इक्वल्स टू 15 के लिए मुझे 3 और 5 चाहिए, अगेन इट इज नॉट पॉसिबल। n इक्वल्स टू 16 के लिए आई नीड अ साइकिल ऑफ लेंथ 16 जो कि S7 में पॉसिबल नहीं है। 17 नहीं हो सकता है, 18 वैसे ही और नहीं हो सकता है। सो दीज आर द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n विच आर पॉसिबल। Now, कितने values of n हैं? That is a question. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So there are a total of 9 possible values of n. So इस question का answer है the total of 9 possible values of n. And if even if you're writing the values of n, what we had got in this question, वो भी सही होगा, just that the each value of n should be correct. So even if we place all the values of n, we got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I think 8 or 9 चला गया था, 10, 11 नहीं हो सकता है, 12. So if I write all these values of n, even then I get a full marks for this question. So hope this solution is understandable. Thank you.